think we discussed what is cloud computing, then PAS, IS, SAS, and then we discussed the regions as well, right? Try to understand about the concept of cloud computing, right? Last session में हमने डिस्कस किया था कि cloud computing को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, right? Yeah. I hope you all of you able to see my screen. ये सभी टॉपिक ये सभी पार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. We started from very basic like about the difference between IAS, PAS, SAS क्या होता है, right? We talked about uh, the account, how we can create a free trial account, limits क्या होती हैं, and that's it. Discussed about the region and zones, which is really important because you know that जब भी हम किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे अपना सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स अपना पोर्टल तैयार करते हैं, सो यू शुड नो अबाउट दे इस्टेब्लिश अ मल्टीपल डेटा सेंटर इन डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन. सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है ये हमारी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फेल ओवर, इन केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी. तो यू शुड नो अबाउट कि हाउ इट कैन वर्क. इज इट क्लियर? Yep. Fine. So now from today I'm just going to start practical. Practical in the sense you know that कि हमने content आपके साथ share कर रखा है और उसमें सबसे पहला जो topic है which is compute. Under the compute, a number of services are available and we'll try to complete each and everything with practical because you know that last 1.5 साल या 2 साल से अगर हम बात करें सभी क्लाउड प्रोवाइडर ने, तो जो एग्ज़ाम का वे होता है, एग्ज़ाम का वे इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है. जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आई शेयर द सम टेम्पलेट इन द सेंस कुछ सैम्पल क्वेश्चन है अपने पास लेटेस्ट 2-3 महीने पुराने के, तो आई शेयर विद यू, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाउड सर्टिफिकेशन के लिए, राइट? तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, हाउ वी कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप जितना टाइम लगाएंगे पोर्टल के ऊपर, जितना टाइम देंगे पोर्टल के ऊपर, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए सर्टिफिकेशन. प्लस अगर आप कहीं जॉब भी देख रहे हैं आर्किटेक्ट लेवल की, तो उस केस में भी ये हेल्प करेगी. क्लियर? सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम AWS Amazon EC2, right? This is our first practice. Not EC2, Amazon Compute Services. Under the compute services, we will discuss lots of things. Is it okay, guys? Any question? No. Fine. So about the compute services, we should know about how many options are available in compute. Meanwhile, यहाँ पे हमने portal भी open कर रखा है. This is our Azure portal. We just need to click on services. Under the services, left panel पे देखेंगे. So we are able to find n number of services are available, right? These all are the options. These all are the services basically. Manjit, just one thing. Please. Please, can you start the recording? Yes, already started. A quick question, Manjit. Please. When you say compute, okay, just the basic. What exactly हम बोलना चाहते हैं compute? मतलब क्या कर रहे हैं compute में? Okay, cool. So आप कह रहे हैं compute services, okay? There might be multiple compute services, but basic fundamental जब आप when we say compute, what does it mean by compute? Compute as per the name suggests, like as a computer अपने पास होते हैं, like computer in the sense you have a proper multiple devices can make a computer. Right. Keyboard, mouse, monitor, and hard drive, motherboard, CPU, RAM, इन सभी के combination को हम computer बोलते हैं. As it is, basically the meaning of compute is a combination of virtualization plus cloud. It can also give us options just like a assemble and deassemble the computer, but not with the help of hardware, with the help of logical components, with the help of logical services. Think about it. If you want to go assemble a machine, if you want to assemble a desktop, आपको एक proper desktop create करना है. So you know that these all are the components that must required. You must need to purchase a system unit, you need to purchase a monitor, keyboard, mouse and cables like that. Then you are able to make it computer. Is it correct? Mm-hmm. Think about the compute services. So compute basically it's a combination of
virtualization plus cloud technology. It means that in this case you are able to you are responsible to assemble the machine. But how we can do that? You need to select the operating system, you need to select the hardware, how many instances, how many means RAM or CPU you want to add, which is considered as a hardware, Resources. right? You need to select the network, you need to select the firewall. I'm talking about the virtual firewall, considered as a security group. So कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम assemble कर रहे हैं, but in the format of logical things, not in a physical way. Hmm. Hmm. So compute, the actual meaning of compute, you can say that combination of virtualization plus cloud tech. The cloud tech is a kind of inventory that gives us option to select the services and design what you want. Not only the virtual machine, you are able to manage lots of things with the help of compute services. You can host your website, you can purchase a WordPress, you can configure your database services. Everything, all types of platforms are available in our compute services. Okay. Is it okay? Yeah. Try to understand about the options or services which is included in compute services. So just need to click on all services. We are able to find compute. राइट पैनल पे ये आपको पूरी डिटेल बताएगा कि इन केस ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज you have a these types of applications are available, these types of services are available in our compute services. AWS App Runner, Batch, EC2, EC2 Image Builder, Elastic Beanstalk, Lambda, Lightsail, AWS Outputs, serverless application repository. These all are the components of our compute services. And These are all these are all components, or these are itself compute services? these all are, you can say that, example of compute services. Example of compute. Okay. तो कहीं ना कहीं ये खुद ही कंप्यूट सर्विसेज है, बट इसको Right. यू नो दैट द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें तो पोर्टल को जितना बेटर डिजाइन करेंगे लोगों को समझ में उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा. बिकॉज यू नो दैट किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर मार्केट में जगह बनानी है ना, तो उनको अपना GUI पैनल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनाना पड़ेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू इम्प्लीमेंट. बाकी प्रोसीजर आपने यूज़ करना है, बट यू शुड नो अबाउट कि द सर्विस ऑफ बैच या सर्विस ऑफ इलास्टिक बीनस्टैक विच इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूट. तो फटाफट कंप्यूट वाले फोल्डर को ओपन करो एंड इट विल गिव अस ऑप्शन टू कॉन्फिगर द इलास्टिक बीनस्टैक. Right. क्लियर? इफ यू कंपेयर द एंटायर क्लाउड प्रोवाइडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमेजन, अगर आप यहाँ पे मीन वाइल एज्यूर भी ओपन कर लो और गूगल क्लाउड भी ओपन कर दो, तो दे आर ट्राई टू स्टैब्लिश आवर पोर्टल. मीन्स अपने पोर्टल को वो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे चेंजेस करते रहते हैं, जो हमारे कस्टमर को या यूजर को, यानी हम लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए. तो ऑल आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज, यू कैन से दैट. And each one, does it carry a licensing cost? I mean, user आता है ना, will you have to take each one of those components, or it'll all be bundled together? You're talking about the licenses for your services. Licenses के लिए each and every cloud provider can give us option of BYOL, which is considered as a hybrid benefits. ठीक है, हर एक cloud provider हमें BYOL का ऑप्शन देता है, bring your own license का ऑप्शन देता है. It means that if you have your own license, like you are planning to establish your server 2012 or 2016, और आपने लाइसेंस पहले से परचेज कर रखा है, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस पे आपके पास लाइसेंस है, you want to purchase the same computer, same operating system through AWS portal, so you want to utilize your license. जब अगर आप अपना खुद का लाइसेंस यूज करते हैं AWS वर्चुअल मशीन के साथ, AWS will give you 49% ऑफ डिस्काउंट. उस इंस्टेंस पे आपको 49%, लगभग 50% का डिस्काउंट मिलेगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, आप ये EC2 परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, and the configuration of this EC2 may be 4 gig of RAM, up to 2 core of CPU, and up to 50 gig of HDD hard disk drive. This is the configuration with the operating system of server 2012. इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है आपको विदाउट लाइसेंस, जो आपको AWS की कॉस्ट पड़ रही है, इट मे बी up to 3,000 rupees per month, right? If we talk about hourly basis, so you have to pay 5 rupees per hour.
That's a base price, right? Without license, right? Sorry, we don't have a license. अगर आप इसमें with license, अगर आप without license भी जाना चाहते हैं, if you want to use your own license, आप Amazon को बताना चाहते हैं I don't need any kind of license because मेरे पास है, I want to use my I want to utilize my existing license. तो बोलेगा ठीक है, आप हम अगर आपके पास लाइसेंस है, so I'll give you 49% of discount. So 49% डिस्काउंट, जो हमारी मशीन थी 3000 की, वो अप्रॉक्सीमेटली 1500, जो हम पेमेंट कर रहे थे 5 रुपीज़ पर आवर, 2.5 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हमें पेमेंट देना पड़ेगा. क्लियर? The BYOL service available not only for the operating system, if you have any application, कोई आप पेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर अमेजन के मार्केट प्लेस में वो एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो यस, यू कैन यूज द सेम एप्लीकेशन लाइसेंस ओवर अमेजन पोर्टल एज वेल. You can do that. So, for example, if I'm using WebLogic, okay, and I'm using a WebLogic service on AWS, and I might have purchased a license for that, so I can still use that service at probably at a discounted rate, and then I can still go ahead with that, right? I mean, I can use my license, but I'll pay discounted. Okay. You just need to inform AWS कि I have my own license. आप मुझे केवल हार्डवेयर दे दो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, एंड I'll take care about the licenses. आप लाइसेंस की हेडेक मत लो. I'll use my license. You just need to provide me a place. आप हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो. Okay. Clear? So these types of activity consider as a you can say that as a हाइब्रिड बेनिफिट. इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड बेनिफिट विद एनी क्लाउड प्रोवाइडर, नॉट ओनली विद Amazon. Can we say this is like an infrastructure as a service? Definitely, because you are performing your own task. Right. As we discussed, in case of our infrastructure as a services, 75% task you are responsible to perform by self. 25% activity managed by the provider. Okay. Clear? Yes, sir. Next, any other question? So if you go back to that our AWS portal, right? Yep. All the services that you are showing out there, like now the compute services, by default, all these services will be available for us to use, or we have to configure and get each of those services? We are able to use these services. Configure तो करना ही पड़ेगा. We need to provide the configuration detail. We need to set up a hardware in backend. We also need to know about the concept कि किस सर्विस का क्या काम है, रोल क्या है, कौन सी सर्विस का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए होगा, right? And if we talk about the compute services in year of 2018 or 2017, so that time we have only EC2 image builder, elastic WinStack, Lightcell and Lambda. That's it. Outport या फिर serverless computing या फिर हम बात करें app runner, these all are the services which is recently added by the Amazon. तो अभी तो यहाँ पे केवल इतनी है. हो सकता है 6 महीने बाद कुछ सर्विसेज और बढ़ जाए, हो सकता है 1 साल बाद और कुछ सर्विसेज बढ़ जाए, राइट? करेक्ट. नाइस. क्लियर अबाउट द कंप्यूटर सर्विसेज? अकीब, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल, प्रैक्टिकल्स में होगा. ग्रेट, नो प्रॉब्लम. So can we proceed? And our responsibility to understand each and everything. Think about it. आप एक पूरी तरीके से hierarchy में जा रहे हैं. Means अभी हमने केवल compute open किया and you are able to find a number of options. I'm just going to select the EC2. I'm going to select the batch या फिर कोई भी other services select करते हैं. इन सर्विस के अंदर भी आपको 6 से 7 सर्विसेज मिलेंगी. So that's why carefully आपको हर एक ऑप्शन, हर एक सर्विसेज प्रॉपर तरीके से समझनी है, और जहाँ पे भी डाउट आता है we will discuss. I'm just going to start from very basic. Compute का जो सबसे पहला टॉपिक है which is EC2. I'm going to start with EC2. Under the EC2 we will find n number of options and this is the backbone for our architect. जो भी AWS Solution Architect means अपने आप को present करना चाहता है, even not only for the Solution Architect associate level of engineer or admin level of engineer, even DevOps, जो DevOps में बंदे काम करते हैं ना, उनके लिए भी मैंडेटरी है कि EC2 की सारी सर्विसेज उनको पता होनी चाहिए, because this is the backbone of our, you can say that, portal
lots of things you are able to perform by using this particular option. Clear? Yes. Okay, let me explain you about the services that we need to cover in case of practical, और कौन कौन सी सर्विसेज हमें theoretical में बात करनी है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं. डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर रिसोर्सेज. तो वी हैव अ रनिंग इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, इलास्टिक आईपी, लोड बैलेंसर, की पेयर्स, इंस्टेंसेस, प्लेसमेंट ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, स्नैपशॉट एंड वॉल्यूम. These all are the options that can help us in case of practical terms. Means जो भी practical activity हमें परफॉर्म करनी है वो इस जगह से करेंगे, इंस्टेंसेस वगैरह से जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. These all are the concept. Means इन सभी का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अबाउट द टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस, कितने तरीके के इंस्टेंसेस होते हैं, कितने तरीके की वर्चुअल मशीन होती है, स्पॉट रिक्वेस्ट क्या होता है, सेविंग प्लान्स क्या होते हैं, रिजर्वेशन क्या होता है, डेडिकेटेड क्या होता है, वी शुड नो अबाउट, कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या होता है, वी शुड नो अबाउट. बिकॉज कल की डेट में हम क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो क्लाइंट हमें कोटेशन बनाने के लिए भेजेगा कि आई एम प्लानिंग टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क, कुड यू प्लीज मेक अ कोटेशन फॉर मी. कौन सा इंस्टेंस लगाना है, किस तरीके का लगाना है, वी शुड नो अबाउट. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? So let's start from very basic. I'm just going to start from instances. जितने भी तरीके के instances हैं उनके बारे में बात करते हैं. Then we'll proceed for the practical. Spot, saving plan, reservation, dedicated and capacity reservation. These all are the types of instances. So firstly you should know about what is EC2. सबसे पहले हम EC2 पे चलते हैं. EC2, the meaning of EC2 is basically elastic cloud compute. The meaning of E, elastic, C, cloud, C, compute. यहाँ पे पहले वाले C का मतलब cloud, दूसरे वाले C का मतलब compute. The meaning of EC2 is basically a type of instance. EC2 instance. Same, you can say that it's a type of virtual machine. जैसे हम Azure के केस में, VMware के केस में, Citrix के केस में, हाइपरवाइजर के केस में इसको कंसीडर करते हैं वर्चुअल मशीन. एज इट इज Azure AWS पोर्टल के ऊपर EC2 इंस्टेंस को हम VM बोलते हैं, विच इज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स. सो वी शुड नो अबाउट कि कितने तरीके के इंस्टेंसेस होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट AWS EC2 इंस्टेंस तो कई सारे पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. Like we know that we have a on demand instance, second one is dedicated instance, you can say that reservation, we have option to purchase the instance with the help of a spot request. ठीक है, रिजर्वेशन इज आल्सो कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट. तो मेनली जो अपने पास इंस्टेंसेस हैं वो ये चार तरीके के इंस्टेंसेस हमारे पास है. मीन्स वी आर एबल टू परचेज इंस्टेंसेस बाय यूजिंग दीज फोर डिफरेंट ऑप्शंस. It's our responsibility, we should know about the gap between these instances. It's really important for us because as per the client request ये हमारी responsibility बनती है कि हमें client को कौन सा instance provide करना है. So you should know about कि इन instance की meaning क्या होती है और क्या क्या difference है दोनों के बीच में. Let's talk about on demand. As per the name suggests, on demand instance, ऐसा इंस्टेंस जहाँ पे AWS आपको कभी भी कोई भी डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करता. बिकॉज व्हाट हैपन इन केस ऑफ ऑन डिमांड, यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर VM एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं एंड कभी भी इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं. इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू. छोटे प्रोजेक्ट है, 10 दिन का प्रोजेक्ट है, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, यू कैन प्रोसीड विद ऑन डिमांड. क्लियर? सो इस पे हमें कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. और सबसे ज़्यादा जो इंस्टेंस यूज किया जाता है वो है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस. नेक्स्ट टॉक अबाउट डेडिकेटेड. एज पर द नेम सजेस्ट, डेडिकेटेड बेसिकली जिस भी कंपनी को सिक्योरिटी का कंसर्न है, लाइक एज ए बैंक्स की बात कर लें
या जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल वर्क परफॉर्म करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा डेटा जो है क्लाउड पे इस्टेब्लिश किया जाए और वो डेटा किसी और अकाउंट के साथ शेयर किया जाए। जिस भी क्लाइंट को, वैसे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर ऐसा नहीं करता, बट अगर थोड़ा सा भी कंसर्न लग रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू परचेज एनी सर्विस, एनी शेयर्ड सर्विसेज, उस केस में आप डेडिकेटेड इंस्टेंस परचेज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द गैप बिटवीन ऑन डिमांड एंड डेडिकेटेड में क्या एक्चुअल डिफरेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Every cloud provider categorized in two different parts. This is our backend, and this one is our portal. Portal यानी आप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रंट एंड, एडमिन कंसोल, राइट, अपना कंसोल जो भी AWS का पोर्टल हमने ओपन किया है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ऑन डिमांड इंस्टेंस। जब आप ऑन डिमांड इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, so on demand instance के केस में you must need to provide the location, so n number of locations are available. Like I want to create my instance in location of US East 1A, ठीक है, this is our location. हमने डिसाइड किया कि हम अपना जितना भी रिसोर्स है, मीन्स स्पेशली इंस्टेंसेस को इस पर्टिकुलर लोकेशन में परचेज करेंगे। एंड एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन, रीजन एंड जोन, ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। रीजन इन द सेंस अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन, एंड जोन इज अ पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे इन्होंने फिजिकल डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। सो व्हाट दे डिड इन बैकएंड, हर एक लोकेशन में डिमांड के अकॉर्डिंग इन्होंने n number of hosts established कर रखे हैं। n number of hosts are available in a particular location. These all are the hosts. Up to 100 hosts, 500 hosts, thousands hosts are available. These all are the hosts. जब भी आप इंस्टेंस बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट वांट टू परचेज ऑन डिमांड इंस्टेंस, आपको शेयर्ड होस्ट मिलता है। मीन्स दिस इज योर ऑन पोर्टल, ये आपका पोर्टल है, यहाँ पे ABC portal means you are owner of this particular portal, XYZ portal, टेस्ट पोर्टल, ये अलग अलग AWS के अकाउंट हैं। यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया हमने, XYZ ने भी एक इंस्टेंस परचेज किया विद द हेल्प ऑफ ऑन डिमांड, एंड टेस्ट यूजर अकाउंट ने भी एक इंस्टेंस तैयार किया, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल आर द ऑन डिमांड। सेम लोकेशन पे जा रहे हैं आप, मे बी चांसेस ये रहता है कि आप सभी को एक ही होस्ट के थ्रू इंस्टेंसेस सर्व किया जा रहा है इन केस ऑफ ऑन डिमांड। दैट्स व्हाई इट कंसीडर एज ए शेयर्ड होस्ट। सो द आईपी एड्रेस विल बी द सेम? नो, क्यों? आईपी कुछ भी नहीं सेम होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा इसमें, एक दूसरे का कुछ भी सेम नहीं होगा। सी, इफ यू नो अबाउट द ESXi होस्ट, हैव यू आइडिया अबाउट ESXi होस्ट? नहीं। Citrix का Zen सर्वर। Let me show you. Actually, the meaning of host is basically related to the high configuration based machine. Backend में इन्होंने बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन की एक मशीन इस्टेब्लिश कर दी है। एज ए कस्टमर जब हम कभी कोई इंस्टेंस तैयार करते हैं 10 गिग रैम की, 4 गिग रैम की, 8 गिग रैम की, तो उस मशीन का छोटा सा पार्ट हम यूज करते हैं बेसिकली। इज इट ओके? क्लियर? तो ऑन डिमांड जो इंस्टेंसेस है, ऑन डिमांड जो वर्चुअल मशीन्स हैं, विच इज फुल्ली रिलेटेड टू द शेयर्ड होस्ट। थिंक अबाउट द डेडिकेटेड। अब अगर हम डेडिकेटेड की बात करें, हेलो Manjit, can you just explain that host one more time? How to define host? Give me 1 minute. I'll show you the practical. This is my workstation, और यहाँ पे ना मैंने एक होस्ट बना रखा है, ESXi होस्ट बना रखा है।
So about the configuration of my ESXi host is, मैंने इस ESXi host में जो configuration रख रखा है, let me check, which is contains 6.1 gig of RAM, 256 gig of hard drive and 2 core of CPU. ये पूरे host का configuration है. Is it okay? Yeah. Yes. By using this particular configuration, I am able to create multiple virtual machine. I am able to create 6 different virtual machine with 1 gig RAM based. So it's a type of platform that give us option to create a multiple compute services, means virtual machines. So as a user, like if I am having I'm logging in from a company, where I'm subscribed for AWS, then I will be using the host to configure the backend, is it? Or the responsibility of host, everything managed by the provider. Oh, okay. होस्ट में पावर देना, होस्ट का नेटवर्क देखना, होस्ट में इंटरनेट कनेक्ट करना, होस्ट की हार्ड डिस्क मैनेज करना, होस्ट को मॉनिटर करना, एवरीथिंग मैनेज बाय द प्रोवाइडर. और जो यूज करना है ना, मतलब होस्ट पे जाके लॉग इन करके वहां से वी नीड टू अलोकेट व्हाटएवर कंप्यूट वी नीड. दैट इज अस. एग्जैक्टली, दैट इज द एग्जैक्टली. सी, सो यू कैन से दैट ये जो पैनल हमें दिखाई पड़ रहा है ना, दिस इज इन्वेंट्री, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये इन्वेंट्री है. गॉट इट ना? इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री. बाकी के जो हार्डवेयर है ना, वो बैकएंड में एस्टैब्लिश किए गए हैं. और तो मतलब ये जो आप दिखा रहे हैं अभी, आई मीन एपी साउथ वन कंसोल, ये एक होस्ट है. एग्जैक्टली. नो दिस वन इज द लोकेशन. और इस लोकेशन में इन्होंने हजारों होस्ट लगा रखे हैं. ओके. 1 2 3 नहीं, एज पर द डिमांड, एज पर द कस्टमर रिक्वेस्ट, हजारों होस्ट इनके पास रन कर रहे हैं इस लोकेशन में. हाँ, ओके. वो पूरा पाथ नहीं मिलेगा ना, we will not get that whole path. सिक्योरिटी नो वन कैन शेयर. इवन ये भी नहीं बताएंगे कि कौन सा टूल ये बैकएंड में यूज कर रहे हैं. दे नेवर डिस्क्लोज. किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर, कभी भी कोई क्लाउड प्रोवाइडर अपने बैकएंड की चीजें डिस्क्राइब नहीं करता. क्लियर? वो जो चेंजेस करेगा इस पैनल में चेंजेस करेगा, विच इज कंसीडर एज ए इन्वेंट्री. आई एम गोइंग टू शो यू 2 इन्वेंट्री, जहां पे मींस दिस वी आर गेटिंग अ वन आईपी एड्रेस 192.168.1.13, करेक्ट? इस आईपी को हम यहां से एक्सेस कर लेते हैं. This is internal IP, right? 192. Private IP address. Yes. Private.
133, 131. Please try to compare our inventories. ठीक है, ये जो पैनल है, you have a full rights. आप इसके ऑनर हो, आप बैक एंड भी हैंडल कर रहे हो और फ्रंट एंड भी हैंडल कर रहे हैं. अगर हम अपने क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, स्पेशली अमेजन की बात करें या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है, उसमें से सिर्फ हमें केवल ये फ्रंट एंड का एक्सेस मिलता है. वी डोंट नो व्हाट हैपन इन बैक एंड. यहाँ पे देखो, दिस इज आवर फ्रंट एंड, और ये जो हमने, ये जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है विच इज़ अ बैक एंड, ये हमारा होस्ट है, और जो हमने GUI में एक्सेस किया है विच इज़ अ कंसीडर एज ए आवर इन्वेंट्री. सो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री का एक्सेस देता है, बैकएंड की सर्विस का एक्सेस नहीं देता. इज इट क्लियर? Yes, what you are showing right now, ये जो आप दिखा रहे हैं, this is on premises, आपका खुद का सेटअप है. ये खुद का सर्वर है, खुद का होस्ट है. इसमें हमने मल्टीपल VMs तैयार कर रखी है, 2 वर्चुअल मशीन बना रखी है. हाँ. अभी इतना कैपेसिटी है, कॉन्फ़िगरेशन है कि 2-3 VM मैं और बना सकता हूँ इसमें. हमें बस ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी रैम कम होनी चाहिए. जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारा होस्ट है, उससे कम ही रैम यूज करनी है. क्लियर? Yes. Now talk about the gap between what we can say that on demand and dedicated. अब dedicated की बात आती है. So dedicated in the sense कि जब भी आप Azure AWS से बोलेंगे I need to purchase my system but हमें on demand नहीं चाहिए, हमें dedicated चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है, कोई इशू नहीं, you should be request for dedicated host, और dedicated host में आपको पूरा का पूरा होस्ट मिल जाएगा. बैकएंड में इन्होंने होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है विद हाई कॉन्फ़िगरेशन. एंड थिंक अबाउट इट, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 128 गिग ऑफ रैम. इससे कम का आपको मुश्किल है कि मिले, बिकॉज यू आर परचेजिंग अ पर्टिकुलर होस्ट. आप इंस्टेंस नहीं बना रहे हैं, आप होस्ट परचेज कर रहे हैं विद 8 कोर ऑफ CPU. ठीक है. ऑपरेटिंग, 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्ड डिस्क HDD इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको सेपरेट परचेज करना पड़ेगा. वी आर बाइंग जस्ट रैम एंड CPU. इसका नेटवर्क वगैरह जो है वो सब इन्वॉल्व रहेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम और HDD आप उसमें परचेज नहीं करेंगे, इसकी कॉस्ट आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी. और इसका आई मीन ऑब्वियसली इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा ही रहेगा ना. एग्जैक्टली. स्टार्टेड फ्रॉम 1200 टू अप टू, अब कितना भी कर लें, 800 to 1200 इसकी स्टार्टिंग है पर आवर. आई एम टॉकिंग अबाउट पर आवर. इतना आपको आवरली बेसिस पे पे करना पड़ेगा. ठीक है. ना बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट ये है कि आप ये शेयरिंग से चीज़ों से बचा सकते हैं, शेयरिंग की चीज़ों से बचा सकते हैं. आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद शेयरिंग. अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया, पूरा का पूरा होस्ट आपके पास एक्सेस मिल गया, एंड नाउ इस होस्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर होस्ट यू वांट टू क्रिएट 25 वर्चुअल मशीन. आप 25 VM बना सकते हैं, 30 VM बना सकते हैं. इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू. आप अपनी VM को कैसे रखना है, कितना रैम देना है, कितना CPU देना है, वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन का पेमेंट कर रहे हैं. बाकी जो VMs आएगी वो आपकी प्रॉपर तरीके से फ्री रहेगी, सिर्फ OS और हार्ड डिस्क का पेमेंट आपको देना पड़ेगा. Please confirm about the gap between on demand and dedicated. Yep. Clear? Any question? No. जाहिर सी बात है, कॉस्टली, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये, मीन्स इन कंपेयर ऑफ अवर ऑन डिमांड.
Let's talk about reservation. As per the name suggests, the meaning of reservation. If you want to purchase the service for long time, like as आप कोई database establish करना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप रिजर्वेशन पे मूव करेंगे। रिजर्वेशन क्या करता है? इट गिव अस अ ऑप्शन, हाई डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा हमें। पहले यू शुड नो अबाउट द टर्म्स कि यू नीड टू परचेज फॉर 1 ईयर, 3 ईयर्स, या फिर आप 5 साल के लिए परचेज करना चाहते हैं। दीज आर द टर्म्स आर अवेलेबल। Second important part about the discount and payment. So we have a two different way to pay the amount. इन सब का जो चार्जेस है सेपरेट होगा, जाहिर सी बात है, बट वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू पे द अमाउंट। वन इज अपफ्रंट और दूसरा यू नो दैट कि हम मंथली बेसिस पे ईएमआई में पे करेंगे। टॉक अबाउट द गैप। अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करते हैं तो आपको इमीडिएटली 25 से लेकर के अप टू 65% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू प्रोसीड विद EMI, 15% टू 45% तक का डिस्काउंट हमें मिल सकता है। Based on the number of years. इट्स अ फुली डिपेंड अपॉन कि आप कितने दिन से अमेजन पोर्टल पे हैं, आपका पोर्टल कितना पुराना है और कितनी अदर सर्विसेज आपने परचेज कर रखी हैं। सो दैट्स वाई उसके ऊपर डिपेंड ये भी डेडिकेटेड ही होगा ना, मतलब इट इज अ लॉन्गर टाइम डेडिकेटेड। नो, स्टिल वी आर गेटिंग आवर वर्चुअल मशीन फ्रॉम शेयर स्टोरेज, डेडिकेटेड नहीं रहेगा। शेयर ओनली। हाँ, ये शेयर से ही ओके ओके, मतलब ये केवल टेन्योर, आपका टेन्योर जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। हाँ, ओके ओके। तो मतलब वी आर टेलिंग AWS दैट वी आर कमिटेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर टू 5 इयर्स, उसके हिसाब से एग्जैक्टली उनको भी परमानेंट कस्टमर मिल रहा है ना। एटलीस्ट 1 साल के लिए तो बंदा कहीं नहीं जाएगा, राइट? एंड यू नो दैट कि 1 साल तक के लिए अगर हम किसी पोर्टल पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो 100% 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद कुछ ना कुछ और परचेजिंग करेंगे हम। दैट्स वाई कि उन्होंने नॉट ओनली द अमेजन, सभी ने डिसाइड किया है, सभी अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं इन केस ऑफ रिजर्वेशन, कि एटलीस्ट कुछ दिन के लिए हमारा जो कस्टमर है ये फिक्स हो गया कि अगले 1 साल या 3 साल या 5 साल तक हमारे पोर्टल की सर्विसेज को यूज करेगा। क्लियर? यस, कूल। लेट्स टॉक अबाउट स्पॉट इंस्टेंस। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्पॉट इंस्टेंस। यू कैन से दैट स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है ना कि देखो, दो तरीके से हम चीज़ों को परचेज करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट आवर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, दो तरीके से हम चीज़ों को परचेज करते हैं। पहला ये रहता है कि हमें ये मॉडल का लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, राइट? लाइक आई एम प्लानिंग टू परचेज डेल 8 GB रैम या डेल 16 GB ऑफ रैम। जब आप कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं ना, यू डोंट नो अबाउट द प्राइसिंग, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखना होता है। इज इट करेक्ट? करेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास सिर्फ 25,000 है। सो जब आप एक कॉस्ट बता देते हैं, एक आप पर्टिकुलर प्राइस माइंड में सेट कर लिया कि इतना बजट है 25, तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ पाएंगे कि आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज हमने पहले से ही बजट डिसाइड कर लिया कि आई एम रेडी टू पे 25,000, जो भी लैपटॉप मिलेगा मैं वो परचेज कर लूँगा। एज इट इज़, आवर AWS पोर्टल कैन गिव अस ऑप्शन फॉर स्पॉट इंस्टेंस। और स्पॉट इंस्टेंस में आपको अपनी बिडिंग बतानी पड़ेगी, आपकी बिडिंग करनी पड़ेगी कि आई एम रेडी टू पे 1.5 रुपीज़ पर आवर। इफ़ यू हैव एनी वर्चुअल मशीन प्लीज़ लेट मी नो। या आई एम रेडी टू पे 0.5 रुपीज़ पर आवर। ये हमारा बजट है। अगर इस बजट में अगर आपके पास कोई इंस्टेंस है विंडोज़ का, लिनक्स का, या जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। तो उसमें कितनी रैम मिल रही है वी डोंट नो, क्योंकि आपने अपना बजट बताया है उसको। प्रोवाइडर को आपने अपना बजट बता दिया कि आई एम रेडी टू पे इतना, एंड प्लीज़ फाइंड द वर्चुअल मशीन एंड सेंड टू मी, प्रोवाइड टू मी। इज इट क्लियर? यस। ऑन डिमांड, डेडिकेटेड, रिजर्वेशन एंड स्पॉट इंस्टेंस, ये हमारे पास इंस्टेंसेस की डिटेल्स हो गई। सो जब भी हम कोटेशन तैयार करेंगे, जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए कोटेशन बनाएंगे ना, वी शुड आस्क कि आपकी डिमांड क्या है, मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू फॉर विद इंस्टेंसेस। क्लाइंट कहता है कि मुझे वेब होस्टिंग करनी है, मुझे डेटाबेस बनाना है,
मुझे एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस इस्टेब्लिश करना है, तो आप कोशिश करिए कि उसको रिजर्व इंस्टेंस प्रोवाइड करिए, ताकि डिस्काउंट भी और प्लस सर्विसेज भी आपको सेपरेट मिलेगी. इज इट क्लियर? यस. और जो ये स्पॉट इंस्टेंस जो लेते हैं ना, सो there is no guarantee that performance will be there and all, right? Matlab, it could be longer performance because whatever we are getting is based on what we are paying. Exactly. Okay. Like, you know, so if there is some low priority reports and all those things that need to be generated, we can use something like a spot. If you want to purchase the instances in bulk, right? आपको लग रहा है कि आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ वन ऑफिस फॉर द डेटा एंट्री, ठीक है, उनको MS एक्सेल पावर पॉइंट या वर्ड पे काम करना है, तो हमने बल्क में रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, कि आई एम रेडी टू पे 0.5 रुपीज़ पर आवर एंड आई वांट टू परचेज अप टू 25 डिफरेंट इंस्टेंसेस. क्लियर? तो इस केस में जब आपको पता है कि हमें इस इंस्टेंस पे ये काम करना है, इसके अलावा कोई टास्क नहीं करना है, तो डेफिनेटली स्पॉट इंस्टेंस कैन हेल्प अस. एंड दूसरा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल लो पे ही जाएंगे. अगर हमारा बजट सही रहा, आई एम रेडी टू पे 5 रुपीज़ पर आवर, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी बेटर मिल जाएगा. But when you are bidding, you would not know what kind of configuration you will get. No, right? we don't know. Because we have already described. And once you get it, can you change the configuration? You cannot, probably. In case of spot instance, not possible. Clear? So one thing, let's say if I'm going to use an Elastic, the Bean Elastic service, okay? So do I have to first set up an EC2 and then use that service, or I can use that service directly? No. Which service you're talking? Let's say I'm going to use any other compute service, Lambda, for example. यहाँ पोर्टल से कोई दूसरी सर्विस आप यूज करना चाहते हैं, राइट? मैं लैम्बडा मेरे को यूज करना है, या मुझे इलास्टिक बीन स्टॉक यूज करना है एक वेब एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए, ठीक है? तो इज इट नेसेसरी दैट आई नीड टू फर्स्ट हैव EC2 and then have that service, or I can use that service directly? No, both are different to each other. इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, राइट? Both are responsible to perform a separate task. Okay, got it. Lambda responsible for separate task, Beanstalk responsible for separate task. EC2 instance की अपनी अलग की जर्नी है. तो मेरे को लैम्बडा यूज करना, तो मैं डायरेक्टली लैम्बडा यूज कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे को पहले EC2 करना है और फिर उसके ऊपर लैम्बडा मेरे को सेटअप करना है. नॉट मैंडेटरी. यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को परचेज करेंगे. दिस काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, हम यहाँ पे जो हमें चाहिए सिर्फ उसी को परचेज करेंगे. इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो खरीदेंगे तभी ये मिलेगा. Sir, one thing I want to ask. Please. Bani sir. Please. Sir, like, can we also search, like, if we have taken, suppose, spot instance at first, and like in between we have changed our mind and we wanted to jump from spot to reservation or on demand. So, like, we have to start from scratch, or like we can move our hosted things from spot to reservation or on demand. We have option to migrate the same computer virtual machine or application directly to the reservation. For example, अच्छा, okay. For example, आपने एक spot instance परचेज किया. This is our spot instance. And that time आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मिला, लगभग 1.5 गिग का रैम मिल गया इसमें आपको बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है. 2 कोर का CPU मिल गया, ठीक है, और आपने इसमें सर्वर 12 लगा लिया, ठीक है, एंड विद द कैपेसिटी ऑफ 50 गीग ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है. एवरीथिंग इज ओके, प्रॉपरली हम इसका पेमेंट टाइम टू टाइम दे रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, राइट? यू थिंक अबाउट कि एवरीथिंग इज ओके, इनकम भी ठीक ठाक आ रही है, मीन्स जिस पर्पज़ के लिए इंस्टेंस परचेज किया था उससे अच्छी खासी इनकम आ रही है. नाउ आई एम रेडी टू मूव आवर इंस्टेंस इनटू एनी ऑफ लाइक आप रिजर्वेशन में ले जाना चाहते हैं, आप ऑन डिमांड में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको डेडिकेटेड में ले जाना चाहते हैं. सभी कुछ पॉसिबल है, बट कैसे? वी मस्ट नीड टू राइट convert the image of your existing computer.
kind of template, kind of clone. You need to create a image of your uh, 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 you can say that spot instance. इमेज क्रिएट होने के बाद यू नो दैट कि जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या जो भी ड्राइवर्स वगैरह रन कर रहा था उसकी एक कॉपी बन जाएगी. बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इमेज यू वांट टू क्रिएट अ रिजल्ट ऑन डिमांड. आप कुछ भी बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ही आप ऑन डिमांड बना लेते हैं आप इसको डीकमीशन कर दीजिए, इसकी आईपी उठा करके इसमें मैप कर दीजिए. विद इन सेकेंड आपकी चीज़ें जो है इमेज से ऑन डिमांड में आ जाएगी. Okay. So like in sir, in this case we must face like some seconds of downtime as well till the time we are no cloning image. अच्छा नहीं, कोई भी डाउन टाइम नहीं आएगा इसमें. बिकॉज जब तक ये लाइव नहीं हो जाता ना, जब तक ये लाइव नहीं हो जाता हम इसको डीकमीशन करेंगे ही नहीं. अच्छा ओके. जब ये लाइव हो जाएगा देन वी विल प्रोसीड फॉर डीकमीशन. वो कैसे होगा? लोड बैलेंसर में सारी इंस्टेंसेस रखे जाएंगे. जब तक उस क्लस्टर में दूसरा इंस्टेंस नहीं आ जाता, पहले इंस्टेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल. And we can copy data as well. एवरीथिंग जो एक सिंगल क्लिक जो आपके पास पुराने इंस्टेंस में थी वो सब कुछ आ जाएगा. Is it okay? Please confirm. No, we are just discussing about the theoretical part. We'll discuss about the practical as well. Yeah. But काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि इन केस, क्योंकि यू नो दैट किसी भी इन्वायरमेंट के केस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू नो दैट चीज़ें चेंज होती रहती हैं. बजट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं. सो लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चन अबाउट दीज 4 डिफरेंट ऑप्शंस जो हमने अभी डिस्कस किया theoretical पार्ट में, कॉन्सेप्ट में. So we compute we have so many services like Lambda and all the other services. Do you have any example where specifically you would need an EC2 and not that we can work around with the other compute services? You want to say that like as a means why we need to implement EC2, right? हाँ, मतलब EC2 की क्या जरूरत है अगर मेरे पास ये बाकी सारी सर्विसेज हैं. I mean for data computing also there are so many other services like S3, RDS, ये वगैरह, Redshift. What would be that scenario or case study where I definitely need a EC2? मतलब EC2 करना ही करना है मेरे को और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं. See, it's not mandatory. Cloud की think like as a provider, think like as a AWS provider, think like as a owner of Amazon Web Services. ठीक है ना? आपको हर एक कस्टमर का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? यू शुड नो अबाउट कि कस्टमर की डिमांड क्या है. कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं जो मीन्स मे बी बजट से रिलेटेड उनका इशू है, मे बी सिक्योरिटी से रिलेटेड उनका कंसर्न है, राइट? और मे बी वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं. जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूट सर्विसेज की ना, और कंप्यूट के अंदर जो EC2 का पैनल आता है, आपने बताया कि डेटाबेस के लिए हम RDS पे क्यों नहीं जाएंगे या अदर जो सर्विसेज है उस पर क्यों नहीं जाएंगे. द मेन डिफरेंस बिटवीन EC2 एंड योर RDS, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें, डेफिनेटली यू कैन कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ RDS, ठीक है. बट गैप क्या है? EC2 इंस्टेंस में आपको इंस्टेंस मिला, प्लेटफॉर्म मिला, प्लस आप अपना कोई भी सिक्वल इस पे लगा सकते हैं अपनी मर्जी से. सेकेंड इंपॉर्टेंट, दिस इज द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, ठीक है. एंड इन दिस केस अगर आपने सिक्वल कॉन्फ़िगर किया और आपने जब प्लान परचेज किया था, तो प्लान परचेज करते समय आपने 3.5 गिग का स्पेस सेलेक्ट किया था, ठीक है, 2 कोर CPU सेलेक्ट किया था, या फिर 100 गिग स्पेस हार्ड डिस्क के लिए सेलेक्ट किया था. तो दिस इज योर प्लान. इफ यू वांट टू चेंज द प्लान, व्हाट यू नीड टू डू, आपको वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा. यू हैव ऑप्शन टू डू दैट, बट आपको बैकएंड का कुछ भी एक्सेस नहीं मिलेगा. सिक्वल मिलेगा, इसका यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, और जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड आप मेंशन करेंगे ना, यू आर एबल टू गेट द सिक्वल पैनल. यहाँ पे जो भी टेबल बनानी है, क्यूज बनाने हैं, कुछ भी बनाना, सिर्फ आपको ये पैनल मिलेगा. बैकएंड में क्या हो रहा है यू डोंट नो. Okay. You don't have access of hard disk, you don't have access of operating system,
उन्होंने लिनक्स लगाया, विंडोज लगाया, वी डोंट नो अबाउट, हमें इस पैनल से मतलब रहेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ वी टॉक अबाउट अवर EC2 इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, राइट. आप रैम बदलना है, विद इन सेकंड बदल दो. आपको हार्ड डिस्क लगानी है, बिल्कुल लग जाएगी, राइट. आपको बैकअप लेना है, वर्चुअल मशीन डिलीट करनी है, हार्ड डिस्क बचा के रखनी है, वो भी पॉसिबल है, बिकॉज हार्ड डिस्क में हमारा डेटा है. आई वांट टू सेव द हार्ड डिस्क, आई वांट टू डिलीट द वर्चुअल मशीन, वो भी पॉसिबिलिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज कैन गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी. आप 75% तक के ऑनर हैं, आप कुछ भी करिए. इसमें आप केवल 25% के ऑनर हैं. यू हैव अ वेरी लिमिटेड एक्सेस. Clear? Got it. Yeah. And EC2 So instance, EC2 will give you more control, right? Yeah. more control plus more option in compare of platform as a services. यहाँ पे limited है, एक limit है. You are able to configure SQL, you are able to configure MySQL, you are able to configure Oracle, Postgres, like एक limit है यहाँ पे. But in this case, you have a proper access of marketplace. आपको सिर्फ मार्केटप्लेस में नाम बताना है कि आई नीड दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, तुरंत फटाफट सर्च करके आपको प्रोवाइड करेगा. इसमें जब चेंजेस अमेजन अपनी तरफ से बैकएंड से करेगा, देन वी आर एबल टू गेट द चेंजेस. उसके पहले कोई चेंजेस हम अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई EC2 इज द बैकबोन. इज इट क्लियर? या. एनी अदर क्वेश्चन? What about other guys? Any question? No, I'm clear. No sir, no sir. Fine. So these all are the basic information about the instance type. Can we take a small break, just 15-minute tea break, and connect again? Sure. Thank you. Yes sir. Thanks. Hello guys, can you hear me? Yes sir. Vinod, Sohail, can you hear me? Yes. Done. So any question, any doubt about the means बेसिक ऑफ कंप्यूट सर्विसेज? अभी हम इंस्टेंसेस पे हैं, तो इंस्टेंसेस के टाइप्स में या इंस्टेंसेस को समझने में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है अभी? No. I'm clear. Okay. Can we proceed for practical? Yes sir, please. Let's try to implement one instance, because you know that EC2 instance के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमें यहाँ पे देखने के लिए. तो let's start our practical ताकि सभी चीज़ों को कवर कर पाए. ठीक है. इन आवर इंस्टेंस वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. ये टॉपिक हमने कवर किया अभी. वी जस्ट टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. सो इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वी आर एबल टू फाइंड रनिंग इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस, की पेयर, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं. एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टेंसेस. नो इंस्टेंसेस अवेलेबल. यहाँ पे एक लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. मीन यू कैन से दैट वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, इन द सेंस एक ही वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करना चाहते हैं. लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे एंड वी मस्ट नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप.
1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट स्टेप हमें यूज करना है टू क्रिएट अ सिंगल इंस्टेंस, एंड वी नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक ऑप्शन हमें पता होना चाहिए. क्लियर? Yes, sir. The first and important part is AMI, which is Amazon Machine Image. You know that. You know very well about, like जब भी हम लैपटॉप परचेज करते हैं या डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करते हैं, संभल करते हैं, यू शुड नो अबाउट कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलता है, राइट? एंड वी हैव ऑप्शन टू चूज द ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा ओएस हमें यूज़ करना है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इंस्टेंस यूज़ करना है. एज इट इज़ ओवर AWS पोर्टल, जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है AWS पोर्टल के केस में, Amazon Machine Image can give us option to purchase not only the instance, not only the operating system, you can purchase anything. आप यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं. नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, सिर्फ VM नहीं कि विंडोज 7 8 10 या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर पाएँ. यू कैन बाय एनीथिंग. यू वांट टू परचेज फायरवॉल, पॉसिबल है. यू वांट टू कॉन्फ़िगर चेक पॉइंट, आप कोई भी डेटाबेस परचेज करना चाहते हैं, आप कोई भी वेब एप्लीकेशन परचेज करना चाहते हैं लाइक वर्डप्रेस, सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन से परचेज कर सकते हैं. Got it what I'm saying? Like a number of options are available. यहाँ पे My AMI है, AWS Marketplace है, Community AMI है, and free trial only. So let's start with My AMI, which is really important option. My AMI, which is contain two important services. One is owned by me and shared with me. दो different option यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. Owned by me and shared with me. बहुत ही important practical है, बहुत ही important topic है. So let's talk about the usage of My AMI on AWS portal. How to configure EC2 instance. AWS पे EC2 इंस्टेंस कैसे तैयार करते हैं वो हम देख रहे हैं. सबसे पहला जो ऑप्शन आया है विच इज़ My AMI, which is the first option, first step of our virtual machine creation, which is also categorized in two different part. My AMI को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है. My owned image and दूसरा है shared with me. थिंक अबाउट दीज टू इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यूसेज होता है रियल इन्वायरमेंट में. ऑन बाय मी फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि इन केस अगर हमने स्पॉट इंस्टेंस में परचेज कर लिया VM को, तो किस तरीके से उसको हम रिजर्व इंस्टेंस में ले जाएंगे या डेडिकेटेड इंस्टेंस में ले जाएंगे. तो उस प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने मशीन की इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस इमेज में जो आपका इमेज रेडी होगा विच इज कंसीडर एज ए AMI, माई AMI. आपके पोर्टल के ऊपर पहले से कोई इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वन इंस्टेंस, और इसमें आपने सभी सेटिंग कर रखी है. आप इसका क्लोन बनाना चाहते हैं, टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो जो टेम्पलेट आप खुद के पोर्टल से क्रिएट करेंगे वो माई ऑन इमेज में आएगा. दूसरे के पोर्टल से, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग योर ऑन AWS पोर्टल, आई एम यूजिंग माई ऑन AWS पोर्टल. पोर्टल से पोर्टल में जब आप इंस्टेंस की इमेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इमेज जो है इस पर्टिकुलर शेयर्ड इमेज में जाके असाइन होगी. इज इट क्लियर? Can you just repeat the last part? Okay. For example, we have a two different AWS account. एक आपका है, दिस इज योर AWS अकाउंट, abc@gmail की हेल्प से आपने इसको बना रखा है, राइट? I created my account with the mail ID of xyz@gmail.com. ठीक है. Okay. We both contain a separate subscription. आपका अलग है, हमारा सब्सक्रिप्शन अलग है. You created one virtual machine.
एंड आपने काफ़ी मेहनत की, मीन्स यू कॉन्फ़िगर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है, आपने इस पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन और सर्विसेज इंस्टॉल किए, उसमें लगभग 3 से 4 घंटे आपने टाइम दिए, देन योर वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, कुड यू so that's your EC2 instance. हाँ, इंस्टेंस आपने क्रिएट किया और उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपने मैनेज की। तो उसके बाद यू वांट टू शेयर द सेम इमेज विद माय अकाउंट, क्योंकि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट अगेन 3 to 4 आवर्स। मैं नहीं चाहता कि एक वर्चुअल मशीन नई फिर से क्रिएट करें एंड फ्रेश क्रिएट करें एंड देन इंस्टॉल एप्लीकेशन ईच एंड एवरीथिंग। आपने ऑलरेडी वो टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, राइट? तो मुझे क्या करनी है, जस्ट छोटा सा रिक्वेस्ट करना है कि आपने जो सेटअप किया है अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर एप्लीकेशन वगैरह, कुड यू प्लीज़ शेयर द इमेज। आपके इंस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वी आर आई एम एबल टू एक्सेस द सेम इमेज विच इज़ कंसिडर एज ए शेयर्ड विद मी। Okay. Is it clear? Yeah. Yes. But later on, when it is shared, I can make changes to that image, right? उसके बाद फिर आप ऑनर हो गए, आपको उसको कैसे हैंडल करना है, यू आर ऑनर ऑफ पर्टिकुलर मशीन। Got it. Now back to the my, I hope you understand about the concept of my EMI. We are unable to find any image because हमने अभी कोई भी इमेज नहीं तैयार की है और ना ही किसी से कोई रिक्वेस्ट की कि आप हमें इमेज फॉरवर्ड कर दो। इज इट क्लियर? Yes. Second important part is AWS Marketplace. It's really important option. The meaning of marketplace, as per the name suggests, you can consider it just like a kind of you can say that just like a shopping mall. अब देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। In case of infrastructure related software, 3,400 something, developments related 2,800 something, business application 1,000, machine learning 173, IoT 126 product, and industries related we have a 318. Is it clear? Yes, sir. So if we buy from here, is it cheaper, or I mean, is there any advantage? Based on product. Let me show you. I want to purchase सिस्को का फायरवॉल परचेज करना है मुझे, ठीक है, मेरा की फायरवॉल सिस्को का परचेज करना है। सो इन दिस केस यू नो दैट सिस्को इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ना, एक वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, क्लियर? एंड Amazon इज अ सेपरेट ब्रांड, बोथ आर कंपटीटर टू ईच अदर, ठीक है, दोनों लोगों का पर्पज अलग है। Amazon का पर्पज टोटली अलग है, सिस्को का पर्पज टोटली अलग है। पूरे वर्ल्ड वाइड ये जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, मोस्टली अब तो कम हो गया, बट 2010 या 8 की बात करें तो केवल सिस्को के डिवाइसेस ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे थे। इज इट करेक्ट? Yes. Yes, sir. Now in this case what happened, Amazon just give a place सिस्को की डिवाइस के लिए, सिस्को के प्रोडक्ट के लिए सिस्को को ऑथराइज कर रखा है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करो एंड यू हैव टू पे द फ्यू परसेंटेज टू मी। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? एक शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, हजारों शॉप की कैपेसिटी है, उसमें हमने भी एक रेंट पे उठा ली। गॉट इट? तो यहाँ पे रेंट की जगह पे क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट रख लो, उसका कोई चार्जेस नहीं देना है अपने, जैसे सेल होता है, जैसे ये कोई प्रोडक्ट आपसे कोई कस्टमर परचेज करता है ना, तो उस परचेजिंग का कुछ परसेंटेज आप हमें फॉरवर्ड कर दोगे, दैट्स इट। क्लियर? 50,000 का फायरवॉल की कॉस्ट थी 50,000, और उसमें से मे बी कि 5,000 या 10,000 या 2,000, वी डोंट नो अबाउट द कि उनके बीच में क्या डील हुई है, वो पेमेंट Amazon को चली जाएगी, बाकी की पेमेंट सिस्को को मिल जाएगा। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये अपफ्रंट पेमेंट होती है,
ये बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अपफ्रंट पेमेंट होते हैं, उसमें इमीडिएटली आपके अकाउंट में उतना चार्ज आ जाएगा. सो मेक श्योर यहाँ पे जब भी आप परचेजिंग करेंगे, आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि ये जो डिवाइस आप या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इसका कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं है. यू हैव ऑप्शन टू पे इन आवरली बेसिस, मीन्स ये ऑन डिमांड में अवेलेबल है. इज इट ओके? Yes, sir. Now, so marketplace, you can say that n number of option. आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर लो, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग. वर्डप्रेस का सर्वर हमें बनाना है, आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द वर्डप्रेस. एक दो नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल वेंडर वर्डप्रेस से रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल है. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट प्लेस. बाकी आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें क्या क्या सर्च करना है, राइट? कुछ भी सर्च करो, बट मेक श्योर फ्री ट्रायल अकाउंट में कोई भी सर्विस परचेज करते समय आपको ये वेरीफाई करना है कि ये फ्री ट्रायल एलिजिबल है या नहीं. अगर नहीं है तो मे बी कि ये हमें हमारे अकाउंट में चार्जेस कर देगा. तो प्लीज़ केयरफुल रहना हमें इस केस में. Okay. नाउ ये हो गया अपने पास मार्केट प्लेस. अनदर इज कम्युनिटी AMIs, which is really important. You can say that kind of filter. Correct? Kind of filter. You want to purchase Windows related operating system, Mac OS related, Ubuntu related, Red Hat related, तो आपको बस चेक मार्क कर देना है. ये फिल्टर करके सिर्फ विंडोज को दिखाएगा. इज इट क्लियर? आप रेड हैट के प्रोडक्ट मीन्स थोड़ा वैसे धीरे धीरे आ ही जाएगा. मतलब अगर मीन्स अब 3 से 4 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे इंस्टेंस वगैरह बनाने की, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से रट जाएगी बिल्कुल उंगलियों पे कि हाँ हमें क्या चाहिए. सो दिस इज़ द फिल्टर. लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द, अगर हम बात करें यहाँ पे तो विच इज़ क्विक स्टार्ट, और यहाँ पे फ्री ट्रायल ओनली. अगर आपको दिक्कत हो रही मीन सर्च करने में कि कौन कौन सी सर्विसेज फ्री ट्रायल में आ रही है नहीं आ रही, तो उस केस में आप ये फ्री ट्रायल ओनली पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सभी फ्री ट्रायल है. मीन्स नो नीड टू पे अमाउंट. अगर आप 750 आवर्स चलाते हैं इस इंस्टेंस को तो कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेगा. 750 आवर्स के अबव जाएंगे देन यू नीड टू पे अमाउंट. Okay. So one question, just side question on this. Let's say that we created a AMI, right? I mean, with certain products. So, वो product का upgrade and all those things, will that be taken care by the AWS or we should go and do the upgrade? जैसे मतलब 2-3 महीने हो गया and if there's a new version of that software coming up. तो वो हमें करना पड़ेगा या AWS करके देगा मतलब वो अपग्रेड? we have a both option. जैसे ऑन प्रोमाइसेस के केस में यू नो दैट ऑन प्रोमाइसेस के केस में पैचिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑटोमेटिक अपडेट लगा देते हैं, SCCM अपडेट लगा देते हैं, ठीक है ना. एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. एज इट इज अमेजन पे भी आप मैनुअल अपडेट लगा सकते हैं अपनी तरफ से. एंड दूसरा जो ऑप्शन है ना, AWS can give you option to update your services, bulk services, मतलब 10-20 मशीनें हैं एक साथ अपडेट करना है, डिफरेंट OS पे हैं, तो yes, AWS can give us option as a complement, जिसमें आपको अपडेट के लिए कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा. मीन्स जो भी पैचेस होंगे वो आप डायरेक्टली वहाँ से उठा सकते हैं. मीन्स आपके इंस्टेंस खुद ही समझ जाएगा कि कौन सा नया पैचेज है, कौन सा इंस्टॉल करना है. क्लियर? ओके. नॉट ओनली द अमेजन, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको ऑप्शन देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड पैचेस जो है आप डायरेक्टली AWS पोर्टल से ही बाय कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. क्लियर? या ओके.
But what patches you will have to do it your own, right? I mean, no one from AWS admin or anyone would do it. It will be you yourself will be kind of owning that. यप यप आप जो आरडीपी देंगे ना, वो आरडीपी का बंदा कुछ नहीं करेगा. यू आर ऑनर ऑफ पोर्टल, है ना. जो पोर्टल हैंडल कर रहा है वही पैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. So, but for example, you are using an Amazon service, right? And now Amazon comes up with a new version of that service. Then that would be taken care by AWS or even no. Product owner taken care the entire new patches ना. Amazon को कोई मतलब नहीं उससे. It just give you option. For example, I mean, like, there could be like downtime and all those things, right? No. So, only the product owner would know. Exactly. So, makes sense. आप Windows 7 परचेज कर रहे हैं. For example, you are planning to purchase a Windows 7 Ultimate, ठीक है ना. 2 महीने बाद कुछ अपडेट आया तो Amazon का विंडोज से कोई मतलब नहीं है. वो केवल कोऑर्डिनेट करा देगा APIs के थ्रू कि ये विंडोज मशीन, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जहाँ से अपडेट चला है, जहाँ से अपडेट आएगा. That's it. No, I was asking very specific to AWS services. So, for example, if I'm using Lambda service and now they come up with some new patch or some upgrade of the Lambda service, I will have to basically configure that. It won't be done by AWS Kivo. They bring down my Lambda service and they put the new one there, right? No. See, अगर उसके फीचर्स की बात करें, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इंटायर फीचर लाइक एज अ लैम्डा या जो भी बिल्ट इन सर्विस अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद अमेजन टेक केयर करेगा. उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट यूज द सर्विसेज. एवरीथिंग द बैक एंड एक्टिविटी मैनेज बाय द प्रोवाइडर. क्लियर? Yeah, that's what I was asking. So let's say there are 5 features now in that Lambda service. Now, if Amazon comes up with another 4 or 5 new features, for me to have the access to use those new features, I will have to upgrade my Lambda service, right? AWS would not do it. Correct. Done? So what I'm going to do, यहाँ पे एक इंस्टेंस परचेज. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ AMI, अमेजन मशीन इमेज. क्लियर है? हाँ. Yes sir. आई एम गोइंग टू क्रिएट वन विंडोज मशीन. ठीक है, यहाँ पे एक विंडोज सेलेक्ट कर लेते हैं. मस्ट बी अ फ्री ट्रायल एलिजिबल. Microsoft Windows Server 2012. Select. This is the another option. Choose an instance type, right? So in case of choose an instance type, we are able to find n number of options are available. Family, type, CPU, memory, instance storage, right? Network performance, about the IPv4 or IPv6 supported or not. So think about it. Type T2 nano, T2 micro, T2 small, T2 large, T2 medium, like that. N number of families are available, which is define the hardware configuration of your system. If you proceed with free trial, क्या मिलेगा इसमें? 1 core का CPU, 1 GB की RAM. That's it. If you want a high configuration, you can proceed with T2 small, जिसमें आपको 2 GB की RAM और 1 core का CPU, 2 core of CPU and 4 GB RAM, T2 medium, T2 large, 8 GB of RAM, 2 core of CPU, 16 GB of RAM, 4 core of CPU. So the family can define the types of configuration that you want. Clear? So in case of free trial, definitely we'll proceed with 1 core of CPU and 1 GB of RAM. क्योंकि अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं तो आपको आवरली बेसिस पे इसका चार्जेस देना पड़ेगा. आवरली बेसिस पे हमें इसका पेमेंट देना पड़ेगा. करेक्ट?
Okay, sir. Next, step number third, which is related to the instance configuration. How many instances you want to configure? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Number of instances. Same operating system के आप कितने बनाना चाहते हैं? You just need to type the numbers. एक VM बनानी है, 2 VM बनानी है, 4 VM बनानी है, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे. सिंपल. Another important option which is related to the network, subnet, auto assign IP address, DNS. So अभी के लिए इसमें से कोई भी ऑप्शन हमें सेलेक्ट नहीं करना है because we don't know about the VPC. Currently we don't have idea about the subnets. We have a separate chapter for VPC. We have a separate chapter for subnet. तो इनके बाद अभी हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं बट वी विल कॉन्फ़िगर आवर ऑन VNet. हम अपना खुद का VNet नेटवर्क बनाएंगे. Proceed with So here single instance. it would not ask you whether you want to make this on demand or reserved or those things. No, we are on demand. जब आप इंस्टेंस में जाकर क्रिएट करते हैं, which is considered as a on demand. Okay. ठीक है. So with the host पे हो गया, where we say whether it is dedicated or not. No. If you want to proceed with dedicated host, तो उस केस में आपसे you need to choose the dedicated host, which is option is available on our portal. EC2 डैशबोर्ड पे वो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अवेलेबल है. No, but EC2 instances can be on demand or dedicated, reserved, and spot, right? नहीं, यहाँ पे Those are the four. यहाँ पे जो इंस्टेंस अभी हम तैयार कर रहे हैं, which is on demand, जो इंस्टेंस अभी हम प्रोसीड किए हैं on demand. If you want to proceed Yes. with reservation, you need to select the option of reservation. If you want to create a dedicated host, you must need to select the dedicated option. Okay, so where is that option? Where do we select that option? We have a option related to the dedicated. अब देखिए यहाँ पे dedicated host का option. Oh, okay. There it is. Okay. So by default, it will be on demand. By default, जब आप instance पे जाएंगे तो it's considered as a on demand. Okay. Done? So let's see if I want to make this. If this EC2 instance which I'm creating, if I want to do it dedicated, then I go for dedicated host option. Is that okay? Yes, we need to select it. Okay. And why is it showing two instances running and instances? Sorry. So the first option is instances running, and just below that there is another option saying instances. The number of virtual machine and number of active virtual machine. 5 VM आपने टोटल परचेज की है, राइट? यू परचेज ऑफ 5 डिफरेंट इंस्टेंसेस, जिसमें से 2 टर्न ऑफ करके रख दिया कि इन फ्यूचर मींस बाद में इसको टर्न ऑन करेंगे, अभी उनका वीकली ऑफ जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, ठीक है? तो वो पांचों इंस्टेंस इस लोकेशन में दिखेगा. जो इंस्टेंस रनिंग है, एक्टिव है, वो आप यहाँ पे. एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज किया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. मीन्स इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस ना, कि अगर आपको वेरीफाई करना है, बिकॉज एज ए मीन्स अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द AWS सर्विसेज, तो आपको हर एक ऑप्शन पोर्टल को ओपन करके देखना पड़ रहा था, कौन सी इंस्टेंस रन कर रही है, कौन सी ऑफ है, वो मैनुअली चेक करना होता था. नाउअडेज ये इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कि रनिंग इंस्टेंस वो आपको पहले से ही बता देगा, नो नीड टू ओपन एनीथिंग. आपने केवल लोकेशन चेंज करनी है कि EC2 इंस्टेंस मुंबई में कितनी रन कर रही है, नॉर्थ वर्जीनिया में कितनी रन कर रही है, अदर लोकेशन में कौन सी रन कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग हुए. दैट्स व्हाई दे सेग्रीगेटेड. क्लियर? Yes. Can we proceed for next? Yep. Okay. We are on page of configuration instance. तो यहाँ पे केवल नंबर ऑफ इंस्टेंस अभी के लिए रख लेते हैं, बाकी का चेंजेस VPC पढ़ने के बाद. नेक्स्ट, ऐड स्टोरेज. बाय डिफॉल्ट इन फ्री ट्रायल आपको 30 GB का स्पेस मिलेगा विथ SSD. ठीक है. इफ़ यू वांट टू इनहेंस द स्पीड, अगर आप इसको 100 GB करना चाहते हैं, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, बट थिंक अबाउट इट. फिर आपकी जो डिफ़ॉल्ट लिमिट है वो हम क्रॉस कर रहे हैं.
आप यहाँ से मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, नॉट एन इशू, आप कोई नंबर ऑफ हार्ड डिस्क यहाँ से अटैच कर सकते हैं, लेकिन इस 30 के अलावा जो भी हार्ड डिस्क आप अटैच करेंगे उसका आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा. That's what's written, right? Free tier eligible customer can get up to 30 GB. Correct. Of EBS. Correct. Purpose SSD. Correct. Add-on का चार्जेस अलग रहेगा. Next, tag you can say that it is used for the identification to search your services immediately. So no need to proceed with the tag. I'm not going to make any thing in tags. Another important option is configure security group, which is really important option. The meaning of security group, it works just like a virtual firewall. RDP यहाँ पे एक्टिवेट है 3389 because we proceeded for Windows operating system. Windows के लिए हमने प्रोसीड किया है, तो 3389 आपका RDP लॉजिकल पोर्ट्स है जिसके थ्रू आप अपने वर्चुअल मशीन्स का RDP कहीं से भी वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस राइट नाउ. वी विल क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन, उसके बाद फिर हम चेंजेस करेंगे एक एक टॉपिक पे. बाय डिफॉल्ट योर सिक्योरिटी ग्रुप नेम इज लॉन्च विजार्ड 2. यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट. So what does that warning mean? We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only. Okay. So right now it can be accessed from any IP address. Correct. अगर आपने यहाँ पे 0.0.0 मेंशन कर रखा है तो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आपके इंस्टेंस को एक्सेस किया जा सकता है. If you make the source customize or my IP address, so in this case ये सिर्फ IP एड्रेस आपका एक्सेस कर पाएगा विच इज माई ऑन IP एड्रेस. यहाँ पे हमने माई IP सेलेक्ट किया, राइट? गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? 122.162.146.37. इज इट करेक्ट? ठीक है. दिस इज माई ISP IP एड्रेस जो एयरटेल ने मुझे दिया है, वो हमारी IP एड्रेस है. मीन्स इफ आई प्रोसीड विद माई IP एड्रेस और हम आपको अपने इस VM की पब्लिक IP एड्रेस शेयर भी कर देंगे ना, यूजर ID पासवर्ड भी शेयर कर देंगे, तो कोई भी बाहर के ISP से इस इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? या सो मतलब अगर इफ आई एम डूइंग इट फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन आई कैन गिव अ रेंज ऑफ IP, राइट? मतलब ये IP से लेकर ये IP तक, या फिर मतलब VPN का कुछ तो नहीं. एक्चुअली पब्लिक IP एड्रेस के केस में रेंज कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द प्राइवेट IP एड्रेस रेंज ना. करेक्ट. तो मतलब कॉमा सेपरेटेड IP एड्रेस ऐड कर सकते हो अगर 5-6 लोगों के लिए चाहिए तो. हाँ, फिर आप कस्टमाइज करके उसको मेंशन करेंगे मैनुअली. बट माई IP में तो आपकी जो करंट IP रहेगी वही उठाएगा. तो समझिए मतलब इफ आई वांट टू यूज माय VPN, जो लोग जितने भी लोग मेरे VPN के अंदर है, दे ऑल वांट टू एक्सेस इट, देन आई कैन गिव दैट एक्सटर्नल IP एड्रेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. आई डोंट नो, ओके. Which external IP address would that be? Your ISP public IP address. तो ISP ने आपको IP एड्रेस दिया रखा है, आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कस्टम में जाकर. यू नीड टू टाइप द IP एड्रेस ऑफ योर ISP जो भी प्रोवाइड किया है. Okay. आई वांट टू मेक इट फॉर एनीवेयर, कोई भी एक्सेस करे, इसलिए यहाँ पे हमने एनीवेयर. दैट्स व्हाई ये हमें वार्निंग दे रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, विच इज नॉट प्रोटेक्टेड, विच इज नॉट सिक्योर्ड, डू यू रियली वांट टू प्रोसीड विद दिस? ये बार बार वार्न कर रहा है कि इस केस में कोई भी बाहर का बंदा अगर इंटरनेट से जुड़ा है, अगर उसे आपके VM की पब्लिक IP एड्रेस, यूजर ID एंड पासवर्ड मिल गया तो वो एक्सेस कर सकता है. क्लियर? Yes. And do we need to understand what is RDP and all? RDP, अच्छा, you are talking about this particular option, right? हाँ. Yeah. In our dashboard ना, अगला जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी ग्रुप. अच्छा, okay. Which is directly associated with instance. So in case of security group, I'll give you the complete information about RDP या जो other भी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे.
क्लियर? Yeah. Review and launch. ठीक है? Okay. Security group must need to provide the security group to AWS class. ये हम दे देते हैं यहाँ पे नाम AWS class. This is our security group. No need to do anything. Review कर लीजिए क्या क्या आपने changes किया है. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है. फ्री ट्रायल T2 माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन है. सिक्योरिटी ग्रुप में आपने RDP अलाउ कर रखा है फॉर बोथ द इंस्टेंसेस. IPv4 IPv6 के लिए. Everything is okay. I'm going to proceed with launch. In case of launching, you need to provide a key pair, which is a password. AWS का थोड़ा सा सिक्योरिटी पैनल अलग है. आपको हर एक इंस्टेंस के साथ एक की पेयर तैयार करना पड़ेगा या आप एग्जिस्टिंग की पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन की पेयर विद नेम ऑफ AWS क्लास की. ठीक है, AWS क्लास की के नाम से हम एक की पेयर बना रहे हैं. द की पेयर कंटेन द डिफॉल्ट आर टेम्परेरी पासवर्ड. इस मशीन का जो पासवर्ड है ना वो हमारा इस की के अंदर सेव रहेगा. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. कितने तरीके की कीज रहती हैं, कैसे उनको यूज करें वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू डाउनलोड द की फर्स्ट. AWS class key ये हमने नाम दे दिया एंड प्रोसीड लॉन्च इंस्टेंस. View the instance. It will take up to maybe 2 minutes और 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा. So जो की पेयर आप जो डाउनलोड किया था ना वो आपका लोकल मशीन पे आ जाता है. हाँ, डेस्कटॉप पे आ जाएगा ना. दिस इज माय की पेयर AWS key-pem. सो फोल्डर में जाकर के so if I had to log in from another machine to the console कैसे करोगे? फर्स्ट टाइम के लिए आपको की मंगानी पड़ेगी. और यू कैन आस्क टू योर AWS एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो इस मशीन को एक्सेस कर रहा है उसको बोलो कि आप पहले लॉगिन में ही इसका पासवर्ड रीसेट कर लेना ताकि बार बार आपको की जरूरत ना पड़े. Okay. वेट फॉर फ्यू मिनट. 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और जैसे ये रेडी होता है वी विल कनेक्ट. तो once it starts running right instant तो मतलब should we manually shut it off or can it run? I mean like it'll auto destroy after if there is no usage or something like that. No. We have option to stop it anytime. Okay, because I mean like for the free tier can we run it throughout or is there a time limit? In case of free trial every month we will get 750 hours. मीन्स अगर आप गलती से छोड़ भी दिए रन करते हुए ना तब भी कोई चार्जेस नहीं जाएगा 1 महीने तक. ठीक है ना. एक मशीन है पूरे पोर्टल पे तो मोर देन वन वर्चुअल मशीन है तो इट विल कंज्यूम द एंटायर 750 आवर्स विद इन 15 डेज और उसके बाद का पेमेंट हमें देना पड़ेगा. तो मतलब हर महीने 750 आवर्स मिल रहा है हम लोग को. 750 आवर्स एवरी मंथ. यस. Still is in progress. How we can verify? आप देखिए यहाँ पे स्टेटस चेक्स में still initializing. यहाँ पे 2x2 चेक आएगा. Initializing in the sense preparing your virtual machine. तो ये अभी दिस इज कौन सा रीजन है? दैट्स द ओनली थिंग दैट वी नो. एशिया पैसिफिक साउथ. Asia Pacific. No, it's a Mumbai region. Okay. Checks post.
2x2 check passed means everything is okay, कोई error नहीं है इस instance में, you are able to connect it. Very basic step that you need to use to connect your virtual machine. Click connect, get password because we don't know about the password. और यहाँ पे आपको AWS hyphen class की ये चूज करना पड़ेगा. And जो हम लोग पहले डाउनलोड किए. हाँ, डाउनलोड करके हमने डेस्कटॉप पे रख लिया था. AWS क्लास समथिंग करके. This is our key. Select and open. Decrypt the key. Encrypted format रहता है 64 बिट में. Decrypt करेंगे. This is our password. Copy the password and download remote file. By default इसका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है. पासवर्ड जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो. सेम पासवर्ड हमने पेस्ट किया एंड क्लिक कंटिन्यू. You know that configuration इसका बहुत ही लो है, means 1 core of CPU, 1 GB of RAM, that's why थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. We are able to access our virtual machine and it gives us option of information about your instance ID, types of your computer name, public IP address, private IP address, location, type of your instance, and type of your architecture, CPU architecture. Clear? And talk about the password reset. क्योंकि if you want to reset the password, अगर आपको बार बार कीज का इस्तेमाल नहीं करना है तो यू जस्ट नीड टू ओपन, यू नीड टू रीसेट द पासवर्ड. बहुत ही बेसिक सा स्टेप. cmd net स्पेस यूजर administrator, type your password cloud@123 space /active yes. ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे पासवर्ड को रीसेट करने के लिए. Is it okay? Please confirm. Yes. Okay, sir. The command completed successfully. Do one thing. Let's take a RDP from your side. ये भी इसकी पब्लिक IP एड्रेस है. अब अपने सिस्टम पे mstsc टाइप करो and type this particular public IP address and use username and password and try to connect. What was that command name? mstsc. Sir, which IP we have to take? That 108? No. 3, 108. 172 dot. No. 172 is a private IP address. 3.108. Yeah, that is what I was thinking. Okay. 3.108. Now it's asking for a pin. No, वो change करो सोहेल. I mean, just use additional options. Use a different account. More choices. Okay.
And then it will ask for a username and password. Okay. अभी username होगा अपना administrator. Is it case sensitive, A capital or? यूजरनेम में कुछ भी चलेगा, केस सेंसिटिव नहीं होता. विंडोज के केस में, लिनक्स के केस में हो सकता है. पासवर्ड पासवर्ड क्या होगा सर? cloud@123. कैपिटल सी. No, all are small. cloud@123. The identity of remote computer cannot be verified. Yes sir, I've got the access. करेक्ट. मेरी तरफ से एक्सेस जो इसका कैंसिल हो गया और कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है बिकॉज इट्स नॉट अ मल्टी सेशन. तो जाहिर सी बात है एट ए टाइम एक ही बंदा इसको एक्सेस कर पाएगा. Yeah, you have been disconnected because another connection was made to the remote. मैं कनेक्ट किया हूँ. I'm connected now. Okay. But you can have multiple people also connect, right? Required terminal services. Okay. है ना, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे. Okay, not through remote desktop connection. ठीक है. नहीं, रिमोट डेस्कटॉप ही रहेगा वो, बट उसके लिए टर्मिनल सर्विसेज कॉन्फ़िगर करके लाइसेंसेस देना पड़ेगा हर एक यूजर के लिए. और अभी एक ही यूजर यूज करेंगे, राइट? एट ए टाइम यूज करेंगे. You can't have like four administrators login, right? It will be only one. Okay. Mm-hmm. This is only one user right now. If anybody want to pull it from me. So ideally, whenever an EC2 is created, so is that the way you basically access that machine? That is going to be through remote desktop connection, or you have to go into the console and through there you have to access it? They have both options. We are able to also connect with the help of, you can say that, SSH as well. मैं डिस्कनेक्ट किया हूँ. Then in that case, you can also use like putty and those things also, right? To access SSH through putty. SSH. Any doubt, any question? No. Okay, let's go through the topics that we completed. 5 मिनट का टाइम लेकर के जितने भी टॉपिक, नॉट अदर, ये जो इंस्टेंस क्रिएट करने का स्टेप हमने यूज किया ना, एक बार गो थ्रू कर लो. कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. और अगर ये अभी जो हम लोग जो इंस्टेंस बनाया है ना, if we need to stop that instance, how do we do that? Yep, we can do that. मीन्स अगर हमें नहीं यूज है इसका ना, तो आप एक्शन पे जाके इंस्टेंस स्टेट का ऑप्शन आता है, यू कैन प्रोसीड विद स्टॉप. ओके. जब भी इसको टर्न ऑन करना है, वी कैन डू दैट. वो टर्मिनेट क्या होता है? Terminate will cancel probably. डिलीट. अगर हमें इसको परमानेंट डिलीट करना है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, देन ओके. डिलीट इट.
हम लोग स्टॉप कर रहे हैं तो जितना भी हम लोग कंप्यूट यूज किया है वो सेव होके उधर ही बैठेगा ना, एंड वी कैन ऑलवेज गेट दैट. Yes, but you don't have a you don't need to pay the amount. अगर आप इंस्टेंस स्टॉप किए हैं ना तो उसमें सिर्फ आपका जो चार्जेस जाएगा खाली स्टोरेज का पैसा देना पड़ेगा शायद. वो सिर्फ हार्ड डिस्क का पैसा देना पड़ेगा. राइट. करेक्ट. And if I want to save this as my image, can I save it? You want to upload your own operating system, right? Hello. क्या कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? Now it's okay. Yes. If you connected with मोबाइल फोन और आसपास में टीवी वगैरह चल रही है या फिर कोई दूसरा लैपटॉप यूट्यूब वगैरह चल रहा है तो उस केस में ऐसा होगा, ये बैकग्राउंड नॉइज जो ये इको वगैरह. तो सोहेल का क्वेश्चन था कि मतलब if we create one instance like this, can we duplicate that instance because we don't have to go through all those 7 steps, right? Yeah, we have like basically saving this as my image. We have already discussed about it in theoretical, not practical. Remember हमने यहाँ पे एक डिस्कशन किया था. Yes, this one. हाँ. My own image. I was trying to अच्छा. How can I save it? I was just trying to see that option. Okay, how we can create an image, right? You want to see that? Right. Action. We have option of image. Click create image. Got it. Okay. And you can even share this later on. Okay. Right. So when I save this or create this image, it goes into my owned, right? Okay. Yes. It won't go into the community AMI. Yes. That is altogether different. Correct. But जब आप इस इमेज को किसी दूसरे अकाउंट के साथ शेयर करेंगे ना तो उसके लिए वो शेयर्ड इमेज में आएगा, शेयर्ड AMI में आएगा. Got it. You can create image into community AMI also, or that is altogether a different group which creates those? Sorry, please repeat. Community AMI जो है, right? Can an individual user create any image and put it in the community AMI, or is there altogether a dedicated community from AWS which keeps on creating those images? Only AWS responsible to add or remove the image in community AMI. Okay. अपने पास सिर्फ अपने लिए जो स्पेस है वो my AMI का स्पेस है, बाकी नहीं. Got it. Okay. A regular user cannot. Okay. Correct. वो की पेयरिंग का फंडा एक बार फिर से जरूर सब बता सकते हैं क्या? ओके. की जो क्रिएट करते हैं Amazon पोर्टल पे जब भी हम आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल वी आर प्लानिंग टू क्रिएट वन इंस्टेंस ऑन विद द हेल्प ऑफ AWS पोर्टल. ठीक है, कोई सा भी इंस्टेंस हो, इसमें भी लिनक्स और विंडोज और मैक, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो इसका पासवर्ड होता है ना, you can say that default password, which is provided by AWS only in the format of key pair. ठीक है, by default यूजर नेम ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा, और by default जो यूजर नेम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर.
So it's our responsibility to convert our key pair. हम क्या करेंगे, इस की पेयर को, ये इनक्रिप्ट फॉर्मेट में रहता है, वी नीड टू डिक्रिप्ट इट. वो केवल AWS कर सकता है डिक्रिप्ट इसको. वी डोंट हैव राइट्स टू कन्वर्ट इट. कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर लें वो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. और डिक्रिप्ट करने के बाद ये हमें एक्चुअल पासवर्ड प्रोवाइड करेगा. Gotcha. ठीक है, तो ये एक्चुअल पासवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन. बाकी जो पोर्टल है, ठीक है ना, जैसे AWS की बात के अलावा Azure की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें, अलीबाबा की क्लाउड की बात करें, तो वाइल क्रिएटिंग इंस्टॉलेशन ये आपसे पूछ लेते हैं कि यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद योर ऑन यूजर नेम, और आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं. ठीक है, अच्छा, तो okay. ये ऑप्शन आपको दे देंगे कि आपको XYZ ABC वेब एनीथिंग जो यूजर नेम आपको रखना है यहाँ पे, वो यूजर नेम यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे. पासवर्ड आप कुछ कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, लाइक एज 8 डिजिट कैरेक्टर, 8 बिट सॉरी 12 बिट डिजिट कैरेक्टर, ठीक है, और 14 डिजिट कैरेक्टर, लाइक दैट. एक नंबर, एक उनकी खुद की पॉलिसी रहती है कि वो पॉलिसी अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका पासवर्ड जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा. राइट, क्लियर. so decryption of that key pair is only one time activity, right? One time activity, next time you can change your password by self. And if I don't change the password, then do I have to download that key pair every time? Yes, you must need to put your key pair. आपको सेव करके रखना पड़ेगा. Oh, okay. अच्छा, वो file you'll have to keep. Okay, you'll have to save that and you'll have to use that downloaded key pair file all the time. Correct. Every time वो आपको नया पासवर्ड देगा. Oh, every time then it will be a new key pair file download करनी पड़ेगी. Not new key pair. जब आप उस की पेयर को डिक्रिप्ट करेंगे ना, तो हर बार वो नया पासवर्ड देगा आपको. Okay. ऐसा नहीं कि एक बार आपने डिक्रिप्ट किया और पासवर्ड सेव करके रख लिया एंड ट्राई टू अगेन यूज सेम पासवर्ड टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन. ऐसा नहीं होगा ना, फिर सिक्योरिटी कहाँ रहेगा. Is it fine? Yes. Any other question? No. Can we proceed for next? Yes. Okay. So another important part, पासवर्ड हमने रिसेट करके देख लिया, मशीन को दूसरे लोकेशन से एक्सेस करके चेक कर लिया, राइट. Let's talk about the another components or another services which is available on dashboard. हमारे EC2 डैशबोर्ड पे जो other options दिखाई पड़ते हैं, we should know about. And now
लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं अबाउट द वर्क ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप. थिंक अबाउट इट. पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप है क्या, एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर आवर सिक्योरिटी ग्रुप. जब भी हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो ईच एंड एवरी सिस्टम अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है दैट कंटेन two important services. One is inbound and another is outbound. Inbound and outbound both contain 65,535 logical ports. Same 65,535 logical ports. इसमें से 10,000 पोर्ट्स जो है ना रिजर्व कर दिए गए हैं. नो वन कैन चेंज. बाकी के जो रिमेनिंग 55,535 लॉजिकल पोर्ट्स है ना यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट कि ये लॉजिकल पोर्ट्स क्या है, किस तरीके से काम करता है. विदाउट लॉजिकल पोर्ट्स वी आर अनएबल टू परफॉर्म एनी टास्क ओवर अ नेटवर्क. ना ही हम इंटरनेट चला पाएंगे, ना ही हम कोई डेटा शेयर कर पाएंगे आपस में. Let me give you some examples. Just an example. टेलनेट हो गया, डीएनएस है, सिक्वल है, एसएसएच ऑलरेडी मेंशन. ओके, चलिए ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हो गए. ये सभी प्रोटोकॉल के लिए एक लॉजिकल पोर्ट डिसाइड किया गया है फायरवॉल में. एफटीपी 21, एचटीटीपी हाउ मच, पोर्ट नंबर 80, एचटीटीपी 443, आरडीपी 3389, एसएसएच 22, टेलनेट 23, डीएनएस 53, सिक्वल 1433. तो ये जो नंबर्स है ना बेसिकली कंसीडर एज ए लॉजिकल पोर्ट, और इन लॉजिकल पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज द प्रोटोकॉल्स. इन्हीं लॉजिकल पोर्ट के ऊपर हमारे प्रोटोकॉल्स ट्रेवल करते हैं. अगर ये पोर्ट आपने ब्लॉक कर दिया तो आप उस प्रोटोकॉल की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सिंपल. इज इट ओके? यस सर. नाउ थिंक अबाउट, इसमें दो चीज़ें और ऐड हो गई हैं विच इज़ इनबाउंड एंड आउटबाउंड. तो ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या है? इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इनबाउंड का मतलब अगर आप अपनी इस मशीन से कोई सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, शेयर इन द सेंस लाइक आपने इसमें एक सर्विस इंस्टॉल की IIS, यू नो दैट इसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट होस्ट करने के लिए. इज इट करेक्ट? यस सर. अपाचे इट आल्सो यूज फॉर द वेबसाइट होस्टिंग, बट अपाचे किस में आएगा? रेड हैट का प्रोडक्ट है. लिनक्स के केस में अपाचे, विंडोज़ के केस में IIS का इस्तेमाल किया जाता है. आपने यहाँ पे इस मशीन पे एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, नॉट डिज़ाइन, होस्ट कर दी, राइट? बाहर का बंदा बैठा है, मीन्स बाहर पे इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट आप अपने मोबाइल फ़ोन से लॉगिन करना चाहते हैं, टैबलेट से ओपन करना चाहते हैं इस वेबसाइट को, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से. इफ़ यू वांट टू एक्सेस द वेबसाइट
इस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को इनबाउंड पे पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. Then you are able to access the website. Is it fine? If you want to distribute, if you want to share, name से बिल्कुल opposite जा रहा है. If you want to distribute the web services or any services to outside the network, inbound लगेगा. कोई बाहर वेबसाइट चल रही है, you want to access yahoomail.com, ठीक है, you want to access Gmail, you want to access Google, because ये तो कोई प्रोवाइडर है, कहीं पर भी ये सर्वर इस्टेब्लिश किया गया है. फेसबुक आप एक्सेस करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू, आपको आउटबाउंड में इन चीज़ों को ऑथराइज करने के लिए, इन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, you must need to configure port number 80 and 443 in outbound. Is it clear? The meaning of inbound and outbound. क्लियर? यस सर. ठीक है, डन करें यहाँ तक. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो. ओके, सो अबाउट द प्रैक्टिकल, इसका जो प्रैक्टिकल है we will configure tomorrow. For today you need to create your own free trial account. कहीं से भी आपको एक free trial account create करना पड़ेगा, because we need to proceed practical. तो वो चीज़ें आप खुद से भी implement करके देखेंगे, which is really important, right? तो आप please try to create your own account और उसके through आप चीज़ों को सेटअप करके देखिए.